Hello everyone, welcome to today's discussion, that is chapter number 5 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. Today is the last session of this chapter. So last chapter hame exam padutile, last chapter hame padutile lack of protein ka saritila. hame human genome project kon na start karditile. human genome project ko hame start karditile. तो human genome project का कौन मुझे दी starting रे हम खाली थोड़े reading मार के देखले ताने मोनिटर में ठीक से बुझो human genome project. In the preceding section we have learned जे एट human genome project में लिखा है था जो last session में भी तमान को कोई जे साइंटिस्ट मैंने कौन करते ना ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करिया पई तमे कौन करले ना गोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करदे जे कहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ताको लक्ष्य थिला जे पूरा ह्यूमन रो पूरा जीन सीक्वेंस को से माने माने नोट करके रखे माने ह्यूमन पूरा जीन सीक्वेंस को से माने सेव करके रखबे जे फर्दर यूज पाए जे के कोविड डिजीज को ठीक करिया थिबो को गोटे याको क्राइम मेले जो दीटा जगह सस्पेक्ट ये वित जाने पे तो समय कौन करते ना पूरा ह्यूमन बॉडी को बुझिया पाए समय कौन करते ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते 1990 से केबे स्टार्ट करते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट केबे स्टार्ट हेतला सीक्वेंसिंग ना 1990 स्टार्ट हेतला ताबे कोन ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हाट कॉल्ड मेगा इवेंट अब कोन कहते ना गोटे मेगा इवेंट कहतला तब ताने केमती मेगा इवेंट कहतला ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोन थे अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर था और यदि प्रति सीक्वेंस में यदि $3 यूएस डॉलर खर्च हो पर बेस पेयर ताने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट केते हो 9 बिलियन यूएस डॉलर तो 9 बिलियन यूएस डॉलर माने एते बड़ा गोटे प्रोजेक्ट ला सेट पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोली कह जाए further if often sequences were to be stored in the type form in books if each page of the book contained 1,000 letters each book contained 1,000 pages then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell. जे कौन कहले जति के हम जो डाटा आसी सब जीन सीक्वेंस रो जति हम ताको टाइप फॉर्म रे गोटे बुक रे स्टोर करिया जोतरे सब पेज 100 टा लेटर थियो आउ सब बुक रे 1000 टा पेज थियो तने एंट्री हमको 3300 टा बुक लागि जीवो सब इनसे मन रखिया पाए सब इनसे नोट डाउन करी रखिया पाए so the enormous amount of data expected to be generated also necessitated the high use of high speed computational device for data storage and retrieval and analysis. Human genome project was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. तो सही जो एते नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करिया पे समान जो नुआ एरिया ऑफ बायोलॉजी डेवलप हेतला ता कोन कहले ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स एमबी तमे आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेके सेठी कोन ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल फेनोमेनन बायोलॉजिकल थिंग को कंप्यूटेशनल डिवाइस से स्टोर कर रखा कोन कहला ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स एटा बायोलॉजी रो ओडा नुआ एरिया भाबे नुआ ब्रांच भाबे एस्टैब्लिश हला ताबे कोन ना गोल्स ऑफ एचजीपी तो साइंटिस्ट माने गोल कोन रखतले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करिया जो 9 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर खर्च करिया गोले तो ना गोल कोन थला देखिए कोन मतलब आइडेंटिफाई all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA, determine the sequence of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA, store this information in the database, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sectors such as industries, address the ethical, legal, social issues that may arise from the product project. So, human genome project goal कौन थला ना जो 20,000 25,000 ह्यूमन जीन्स अच्छी ह्यूमन डीएनए रे ताको सब आइडेंटिफाई करिवा DNA रो जो 3 बिलियन बेस पेयर अछि सबुडा को सीक्वेंसिंग करिवा और से इंफॉर्मेशन कोन नै सीक्वेंसिंग रो इंफॉर्मेशन को डेटाबेस रे स्टोर करि रखिवा ताबे सेही डाटा रे एनालिसिस पे टूल्स इंप्रूव करिवा आ कोन ना ए जो टेक ए या रिलेटेड जो सब जिंस अलगा अलगा सेक्टर को जो ट्रांसफर करिवा तो सेटा को माने इंडस्ट्री जो कोटे गोटे इंसुलिन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन गोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी इंसुलिन बनाउछ तो ताको हम जदि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सब सीक्वेंसिंग आले तने को जीन ने इंसुलिन फॉर्मेशन होछ को जीन ता इंसुलिन फॉर्मेशन पे दायी रहउछ तो सेटा कोन करा सही रिलेटेड टेक्नोलॉजी टाको कोन करा ना से इंडस्ट्री को ट्रांसफर करियो आ कोन ना एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट तो सब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रे गोटे एथिकल सोशल और लीगल इश्यूज थाए तो ता विषय रे से माने कोन कोन तबे एड्रेस करिया पई चेष्टा करथि तो एटा तले गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तापर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तांडे के करथि ने यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेलकम ट्रस्ट यूके बिकेम ए मेजर
partner additional contributors kiye thile Japan, France, Germany, China and others were the additional contributors to this. The project was completed in 2003. Project was completed in 2003, exactly 13 years. The knowledge about effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders that may affect human beings. So, मैं ये कहते कोई आसी human DNA sequence जानवर जो knowledge टा कोते काम आसियो the effects of DNA variation among individual जेटा कि हमको कौन हेल्प करियो ना diagnosis, treatment, out prevention ପାଇଁ ମାନେ prophylaxis of thousands of different disorders in human beings. तारे human मान करे तू ऐसे thousands of disease होची तार diagnosis, treatment और prevention रे help करियो कौन ना human जो ना project gene DNA sequence जाने वाला हमको इस सब रे help करियो. Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied toward solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, and environmental remediation. तो खाली ह्यूमन रो DNA sequence जाने के लिए तो non-human organism रो भी DNA sequence जाने ले हमरा कौन हेल्प होबो ना ताकू ने के हमें कौन करबे ना जो डिफरेंट चैलेंजेस अछि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन ए सब रे हेल्प करियो मैं तो गोटा तर इकोलाई बैक्टीरिया ताकू हेल्थ केयर यूज केमती ना तर जो पीसीटी करियो ना पीसीटी में वेक्टर ने के ट्रांसपोर्ट करिवारी एक्सपेरिमेंट करियो यूज हुए तो तार जे डीएनए सीक्वेंस हम जानबे ताने कोन होबो हमको जाना पड़ो जी कोड तार कोड प्लाज्मिड रे कोन भर्ती करियो को वेक्टर अता कोड तार रेस्ट्रिक्शन साइट अछि तो एवडा सब सीक्वेंसिंग गला हमको बेसी डिटेल तो जाना पड़िबो कोदरे एग्रीकल्चर जेमते ढेरुडा को जेमते हमरो राइस रो ढेरुडा को वैरायटी तिला तो एक डीएनए सीक्वेंस जाला हम तर डीएनए सीक्वेंस को चेंज करके तो डिफरेंट वैरायटी रो बेटर वर्जन ऑफ राइस एंड बियर तो एग्रीकल्चर एनर्जी प्रोडक्शन भी से बड़े एनवायरमेंटल रेमेडिएशन तो एई सब एई चार्टर को ना हेल्प तने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ऊपर एक्सपेरिमेंट करले हमरा को चार्टर फील्ड रे हमरा हेल्प होबो ना हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन ये एटा एग्जाम रे आसे many non-human model of organisms such as bacteria non-human organism na bacteria yeast तने के तने bacteria yeast Caenorhabditis elegans a free living non-pathogenic nematode तने elegans कौन C elegans कौन ना a free living non-pathogenic nematode Drosophila the fruit by जानते TH Morgan रो plants रे कौन ना rice और Arabidopsis etc happens तो अपने को non-human model रो sequencing है the bacteria yeast Caenorhabditis elegans C elegans a free living non-pathogenic nematode C elegans टा कौन ना ଗୋଟେ free living non-pathogenic nematode the free living भी और non-pathogenic भी एड़ा सब मन रखो C elegans कौन एग्जाम में डायरेक्ट आसे C elegans टा कौन तुम कौन लिखो मैं free living non-pathogenic nematode और ड्रोसोफिला कौन ना fruit fly plant रे कौन अछि ना rice और Arabidopsis एमान को भीतर सीक्वेंस है ताने कौन कहले नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रे सीक्वेंस कोला हमरा कौन के लाभ होबो ना फर्स्ट towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, and environmental remediation. और तने कहाँ के ऊपर कहला ना बैक्टीरिया, yeast, C. elegans, Drosophila, rice, and Arabidopsis. यहाँ के ऊपर सब सीक्वेंसिंग कराइला. तने मेथोडोलॉजी तने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो जो सीक्वेंसिंग करिवा जीन रो तने मेथड्स कोन तार मेनली दीटा मेथड थिला मैंने दीटा अप्रोचेस थिला द मेथड्स इंक्लूड टू मेजर अप्रोचेस one approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA that is express sequence text by EST तने कौन लिखला तारना आरटा भी पढ़ता the other took the blind approach was simply sequencing the whole set of genome that contained all coding and non-coding sequence later assigning different regions in the sequence with function that is called sequence annotation then कौन बोला ना semana methodology रे हम दीटा हम मेथड यूज करले दीटा मेथड यूज करले जीन को सीक्वेंसिंग मारे पे फास्ट ले कौन ना express sequence type EST कौन थला ना only identifying those genes that are expressing as RNA माने जीन रो खाली जो पार्ट उडा RNA रे एक्सप्रेस होची अरे से उडा को सीक्वेंस करिया को कोन कहला ना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग माने एक्सॉन एडी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रे कोन कराइला बस एक्सॉन्स को मानो सीक्वेंस कराइला एक्सॉन्स को तापर कोन आसिला आउट थिला कोन ना ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contain all non-coding and coding sequence
and letter S depend होते हैं तो कौन है sequence annotation and second method कौन था sequence annotation था ସେଥିରେ कौन था ना both coding and non coding माने exams ଆଉ intros पूरा DNA sequence base pair गुड़ाक जेमिति sequence रे अछि काहाकू भी नोट कि सब गोटे गोटे करिकि सीक्वेंसिंग जो डाटा को माने सेव करि रखले सेटा कोन कहला ना सीक्वेंस एनोटेशन कहला सेति में ताको ब्लाइंड अप्रोच कहला काहे सेतिरे बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग को भी कराउला काहे इंटर्न मान करता हम किछ काम बने इंटर्न तो आरएनए रे किछ फॉर्मेशन करे आरएनए फॉर्मेशन रे टाइप में इंटर्न बस एग्जाम रहता है रेडी दिगा दिला फर्स्ट जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जेडा कि खाली एग्जाम मान को नेकी आ कोन ना सीक्वेंस एनोटेशन बहुत एग्जाम और इंटर्स को नेकी एडा एग्जाम में सब बड़ा आसे for sequencing the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes तर sequencing में कौन करा जाए ना गोटे DNA को नहीं आ जाए तापर ताको isolate करा जाए DNA को तापर ताको में restriction and nucleus देके ताको छोटे-छोटे fragment convert करा जाए और DNA गोटे बहुत long polymer और ताको सब एते बड़ा long polymer को एका संगरे sequencing कराया बहुत difficult है and cloned in a suitable host during using specialized vectors ताने कौन कराला डीएनए कौन कहला फर्स्ट एक्सट्रैक्ट को आइसोलेट कराला तापर ताको रैंडम फ्रैगमेंट्स को कन्वर्ट कराला यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय एंडोन्यूक्लियस तापर कौन करा जिवो ताको क्लोन करके सुटेबल होस्ट मध्ये रे वेक्टर यूज करके पका जिवो the clone resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with these the commonly used host bacteria and yeast the commonly used host कौन ना bacteria and commonly used host है bacteria और yeast the vectors were called BAC bacterial artificial chromosome और YAC yeast artificial chromosome vector कौन थला ना bacterial artificial chromosome और कौन थला yeast कौन थला ना yeast artificial chromosome तने दिला कौन ना हमें जो DNA माने DNA sequencing करिया को जीवा डीएनए तो गोटे बहुत लॉन्ग पॉलीमर डीएनए तो गोटे बहुत लॉन्ग पॉलीमर ताको तो एका संगे टेक्निकल लिमिटेशन आस जो ताको एका संगे सीक्वेंसिंग को जाबो ता सेति में कोन कहला ता फर्स्ट डीएनए को आइसोलेट कराला ताको रैंडम फ्रैगमेंट से एंडोन्यूक्लियस देके छोटे-छोटे स्मॉलर साइज को कराला तमे सेही स्मॉलर साइज को कोन कराला ताको क्लोन कराला सुटेबल होस्ट रे यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर तो होस्ट केतिले होस्ट तिले हमर बैक्टीरिया और यीस्ट आ वेक्टर्स केतिले ना बीएसी और वाईएसी बीएसी कोन ना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो ये थिले दिले जाको वेक्टर the fragments were sequenced using automated DNA sequences that worked on the principle of a method developed by Frederick Sander ताने जो fragments उडा नियाला ताको sequencing केमते कराला ना using sequence केमते कराला using automated DNA sequences that worked on the principle of method developed by Frederick Sander ताने जो Frederick Sander गोटे method of principle develop करले ताको यूज करी कोन कराला ना ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस ना कौन सीक्वेंसिंग फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंसिंग कराला आज फ्रेडिस सनर कौन करले इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स ताने से फ्रेडिस सनर जीवन सब सीक्वेंसिंग मेथड डिस्कवरी करतले से एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग पे मेथड देतले अब एटी कोन एटी डीएनए सीक्वेंसिंग पे भी मेथड दमर फॉलो हितला these sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them ए सीक्वेंस को गला त अरेंज करला ताकर जो ओवरलैपिंग अछि ताको नै के ताको कोन करला अरेंज कराला दिस required generation of overlapping fragments for sequencing alignment of this sequence was not humanly possible therefore specialized computer based programs were developed these sequences were subsequently annotated or assigned to each chromosomes the sequence of chromosome was completed only in May 2006 ताने क्रोमोसोम वाला सीक्वेंस केबे सरला ना मे 2006 रे सरला जंते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन 2003 रे सरला किंतु सीक्वेंस सरते क्रोमोसोम वाला मे 2006 रे होला दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम दैट इज 22 प्लस XY टू बी सीक्वेंस ताने क्रोमोसोम वाला सब तो लास्ट रे सीक्वेंसिंग करा जाइथिला तो लास्ट सीक्वेंसिंग करा जाइथिला तर से केबे सरला ना मार्च ना मे 2006 रे सरला another challenging task was assigning the genetic code and genetic and physical maps on the genome. This was generated using information on the polymorphism of restriction and endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence known as microsatellite. One of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in next section of DNA Punnam. Microsatellite विषय में DNA Punnam रे पढ़िबा तने another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome तने जो genome से हमें DNA को गोटा पर गोटा चिपके
पढ़ले तन ताको बट को जीन को जगह को फिजिकल ये रोचे सेटा को गोटे असाइन करडा गोटे चैलेंज टास्क थिला. This was generated using information on the polymorphism, structure, endonuclease recognition site, and some repeated DNA sequence or microsatellite. Microsatellites or structure endonuclease recognition site रे help में सेटा कौन कराला ना सेटा को एनोटेशन कराला सेटा को कौन कराला ना असाइन कराला. तार एबे कौन देखिबा तार जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सरीला तार एबे पढिया कोन ना साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कर देले सक्सेसफुली हम ह्यूमन रो पूरा बेसिक सीक्वेंस जानले तान ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 वर्ष रो एक्सपेरिमेंट करे एबे आसी कोन ना सेमान कोन मिलला. ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर. तो आमे सेते केते पढतिले ना 3.3 बिलियन बेस पेयर 3 बिलियन बेस पेयर एमती पढतिले. तो एग्जैक्टली नंबर केते एग्जैक्टली नंबर होची 3164.7 मिलियन बेस पेयर बा 3.16 बिलियन बेस पेयर. तमे केते पूरा नंबर टा एग्जैक्टली मन रखिबो जे 3164.7 मिलियन बेस पेयर. The average gene consists of 3,000 base, but size is very greatly, with largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. तो कौन है ना एवरेज जीन कहते करे ना 3000 जीन 3000 बेस पे कंटेंट करता है बट एवरेज जीन 3000 बेस पे बेस कंटेंट करता है बट लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन का ना डिस्ट्रोफिन कहते कंटेंट करे 2.4 मिलियन बेसेस कंटेंट करे. डिस्ट्रोफिन टा माने डिस्ट्रोफिन प्रोटीन परस करे सेटा मेले हम मसल से हम मसल दा गोटे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेटा वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जेटा बिन तार न है मस्कुलर डिस्ट्रोफी वे डिजीज वे माइटोनिक डिस्ट्रोफिन जीन यदि ठीक से फॉर्मेशन ना होला डिस्ट्रोफिन मॉल प्रोटीन जो जस्ट डिग्रेडेशन ही होला then our daily disease वे. The total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimate of 80,000 to 1,40,000 gene. First, the gene total number of gene कितने मिला हमको ना 30,000 gene मिला. That much less than 8,000 to 1,40,000 gene. जब भी सारा previously estimate करते थे इतना बड़ा gene थी वो. Almost all 99.9% nuclear bases are exactly same in all the people. तारे कौन है ना 99.9% बेस सब लोगों में सेम है 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस एग्जैक्टली सेम है सब लोगों में तारे से 0.1% डिफरेंस रही एतोडा को लोकवा को अछि दुनिया रे. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन ताने अननोन केतरा अछि फंक्शन ना ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन द फंक्शन करना अननोन अछि. Less than 2% of the gene codes for protein. Less than 2% of the gene codes for protein. Then बाकी 98 non-coding. Genome codes for protein. Then बाकी 98% of non-coding. Repeated sequence make up very large portion of human genome. से जो non-coding part को ले सेटा होची repeated sequences. So it have very large portion of human genome content करे. Nearly 98% है ना. जो 2% खाली code करा protein बाई. then बाकी 98% useless. तो सेटा तेला कौन ना non-coding sequence. और सेटा करदला ना रिपीटेड सीक्वेंस. तो सेटा ईएसटी के कोन करतले ईएसटी साइंटिस्ट में करले बस 2% रे हम सीक्वेंसिंग कर देबा बट सीक्वेंस एनोटेशन वाले साइंटिस्ट में कहले ना हम जो फर्स्ट टाइम पे थोड़े करछे लाइफ रे तनेटा कोन करतले पूरा को 100% ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करिए. अगर जोति रिपीटेड सीक्वेंस बा ते नॉन कोडिंग पार्ट भी बहुत किछि इंपोर्टेंस थिबो सीक्वेंस एनोटेशन सीक्वेंस एनोटेशन मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करिया अब पूरा ह्यूमन जीनोम का हम करिया सीक्वेंसिंग करिया. Repetitive sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1,000 times. They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics, and evolution. कारण कौन करला ना repetitive sequence करते हैं ना DNA sequence that है repeat है इधर 100 to 1,000 times. तार किसी no direct coding function होता है समय कुछ coding करते नहीं, but समय वो idea जो दिखा रहा ना हमारे chromosome structure, chromosome dynamics और हमारे evolution pattern ऊपर. The evolution pattern of the संगम ना होते आइडिया जो है हमारे इवोल्यूशन केमती है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ताले केमती रहबो डायनामिक्स तो से विषय कोन करते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कोन हेल्प करते हैं. क्रोमोसोम 1 है जो मोस्ट जीन क्रोमोसोम 1 है जो मोस्ट जीन सही सब लास्ट खत्म मतलब 2968 और y है जो fewest that is 231. तो y क्रोमोसोम में सब कम था 231 क्रोमोसोम और क्रोमोसोम 1 कहते हैं ना 2960 में 2968 जीन्स था जीन्स सॉरी क्रोमोसोम को जीन्स
296 genes ଥାଏ chromosome 1 ରେ ଆଉ 231 genes ଥାଏ chromosome Y ରେ. Scientists have identified about 1.4 million locations with single base DNA differences, that is SNPs, single nucleotide polymorphisms, SNPs, occurs in human. This information promises to revolutionize the process of finding chromosome location for disease associated with sequencing and tracing human history. तो कौन कर लो साइंटिस्ट में आइडेंटिफाई कौन कर ना 1.4 मिलियन लोकेशन जोठी खाली गोटे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस रही माने सबुड़ा सेम थी बट गोटे डीएनए बेस सेम अलग थी जेटा कौन कर ना एसएनपीस को आला जे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बस निप्स को आला एसएनपीस occur in human एटा कौन हेल्प करे ना हमको डीजे एटा कौन करे ना हेल्प इन रिवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज सीक्वेंसेस इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री तो ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री माने क्राइम सीन रो जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया तो सप्ताह रे हम हेल्प करे आउ कोन करे ना डिजीज एसोसिएटेड विथ सीक्वेंसेस माने सीक्वेंसिंग रिलेटेड जो डिजीज कोटी जो पॉइंट म्यूटेशन फ्रेंडशिप म्यूटेशन तो ता ऊपर कोन करे ना फाइंड करियर हमको इजी करे जेमते सिंगल बेस डिफरेंस जेमते एग्जांपल दे मुकार आ सिकल सेल एनीमिया ताने सिकल सेल एनीमिया कोन एचपीएल जीन ने कोन था नॉर्मल जेटा थे तो केवल गुटे जगह चेंज हो जाए तब सेटा कोन हो जाए सिकल सेल एनीमिया जे पूरा गोटे बेस पेयर रो चेंज हो तो सेटा को आला सेटा को गोटे एग्जांपल कोन ना एसएमपी रो एसएमपी एग्जांपल होबनी गोटे यूज हो एसएमपी कोन पे यूज हो ना कोन पे जो फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस तो एटा सेटा कोन ना साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम साइलेंट फीचर ह्यूमन जीनोम कौन था ना ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन बेस पेयर था और एवरेज जीन कंसिस्ट कर 3000 जीन्स और 3000 बेस पेयर एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर था हाईएस्ट में डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेस अछि 3000 बेस पेयर 3000 बेस और डिस्ट्रोफिन को ना 2.4 मिलियन बेस और टोटल नंबर ऑफ जीन्स का था 30000 99% 99.9% डीएनए सीक्वेंस सब लोगों समान था अब 50% रो अधिका जीन्स हम फंक्शन जानने लेस देन 2% जेनेटिक कोड्स था प्रोटीन पाई 95% किछि करन दिले समान रिपीटेटिव सीक्वेंस पर हेल्प यूज को ना क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स और एवोल्यूशन पर आईडिया दिए क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स अछि और y रे 231 जीन्स अछि तापर साइंटिस्ट ने कोना साइंटिस्ट माने 1.4 मिलियन लोकेशन ऑफ एसएनपी डिस्कवर कले उनके हम हेल्प करे ह्यूमन ट्रेसिंग ऑफ ह्यूमन आउ कोन ना डिजीज एसोसिएटेड विथ सीक्वेंसिंग जाने ପାଇଁ हेल्प करे तो एटा तला कोन ना साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम तो कोन तला ना साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम तापर कोन करिया ना एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस तो जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कर देला तार एप्लीकेशन कोन रहबो तार अबाउट तार फ्यूचर चैलेंजेस कोन रहबो तार deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research for the coming decades leading to our understanding of biological system. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sectors worldwide. One of the greatest impacts of having human genome sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. In the past, researchers studied one or a few genes at a time with whole genome sequences and new high throughput technologies. We can approach sequencing systematically and on a much broader scale. They can study all the genes in a genome. For example, all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life. तो ठीक है लगले ना हमें डीएनए ना ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट हम कौन कौन हेल्प ले सेठी मेनली कौन देखेले ना हमको कौन मिला ना हमको ढेर नॉलेज मिला हमको इजी हे गला ना सब जीन्स और प्रोटीन मान जीन भीतर केमते काम कर जदी परस्पर को हेल्प करके केमते रेगुलेट होजी गोटे पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को जीन द्वारा रेगुलेट होजी ताका भीतर रिलेशनशिप कोन तो सेडा सब जानिबार हम हेल्प ले पहुंचले ना ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट करिया ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो एथरा हम हेल्प करे तो एटा तो एते कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एते आसे बट एटा होजी तार कोन ना खत्म कला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ए paragraph तापर हम स्टार्ट कोन करिया ना डीएनए फिंगरप्रिंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ओटा मोस्ट इंपोर्टेंट यूज करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग I started in the preceding section 99.9% of base sequence among humans is the same and it is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their
phenotypic appearance 99.9% যদি সেম ରହିଲା then 0.1% ଅଲଗା ରହିଲା। ତ 0.1% ମାନେ କେତେ 1 by 1000 ତାର 3 into 10 to the power 9 base pair ଅଛି ମାନେ 3 into 10 to the power 6 base pair ହିଁ ଅଲଗା ଅଛି ଆମର। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛି। If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive. Thus, imagine trying to compare two sets of 3 into 10 to the 6 base pairs. DNA fingerprint is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individuals. तो से सही କଥା लिखला। जदि हमको दीटा इंडिविजुअल्स बा गोटे पॉपुलेशन भितर डीएनए डिफरेंस को हमको जदि स्टडी करिया अछि तो सब बेले गोटे 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर 3 मिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करके ताको डिफरेंस को चेक करिया दीटा जाका सेट बहुत टाइम टेकिंग तो ता जाय कोन असले ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग असला जो तरे काम को हेल्प करा और जल्दी करिया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोन देखियो DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called repetitive DNA. The DNA fingerprinting कौन कहला ना identifying differences in some specific regions of DNA and repetitive. तो repetitive DNA sequence रे किसी differences को identify करिया को DNA fingerprinting रो technique कहलाजे। Because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. ताने ए repeated sequence को केमती होगा करा जाए ना bulk genomic project रो as a different peak during density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation करके ताको को हमको आज repeated DNA को bulk DNA रो अलग कर दे। Density gradient centrifugation हम कहाँ को नहीं करते वो तो तमों मन अच्छे के नहीं। CGM chloride density gradient technique तेरे हमरे change होता तो सेम बार डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक करके तर एमटी आसीबो तर एमटी एमटी करके ए गुला सीक्वेंस को डिफरेंट पीक रे कोन करा जिवो ताको सेपरेट करा जिवो ते कोन करा जिवो ना सेपरेट करा जिवो द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए तन बल्क डीएनए कोन करिवो ना मेजर पीक बनेबो और अदर स्मॉल पीक्स के बनेबो ना सैटेलाइट डीएनए बनेबे एंड बल्क डीएनए तो समस्त 99.9% डीएनए टा कोन कहला ना समस्त सेम रहता है बल्क डीएनए कहला तो सेटा कोन करिवो ना से जो ग्रेडिएंट रे सबटू बेसिक पीक बनेबो कोन ना कोन मेजर पीक बनेबो बल्क डीएनए और स्मॉल पीक के बनेबो ना सैटेलाइट डीएनए जो आमो जो साइंटिफिक करिवो कला पर आमो टेस्ट ट्यूब आसले एटा उटा आसला बल्क डीएनए जो तळे रहला तर डेंसिटी थी और सैटेलाइट डीएनए ऊपर रहला तर डेंसिटी कम तो ए बळे होली ताको पुने तर ग्रेडिएंट कले तर शेप पीक ग्राफ रे जे कले द पीक आसियो depending on the base composition at reach or GC reach length of segment and number of repetitive units the satellite DNA is classified into many categories तने at कहा का को नहीं के ना at base composition जेटा की at reach GC reach length of the segment और number of repetitive units को नहीं के satellite DNA को many categories से कराई छी example कौन ना micro satellite और mini satellite then these sequences normally do not code for any proteins but they form a large portion of human genome जे तो हमें कहते जे only 2% of protein को कोड करते बाकी 98% किछि करते नहीं किछि प्रोटीन कोड करते नहीं खाली large portion of human genome को बने थांती this sequence show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting इसमें कोन high degree of polymorphism थाई और basis of DNA fingerprinting polymorphism माने अलगा अलगा morphology शो करिया माने आमे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रा यूज करबे होछि दीटा जाक लोकन को डिफरेंट करिया पाए तो एई उडा को एई सीक्वेंस को काहे नि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया पाए त दीटा डिफरेंट इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करिया पाए काहे ना एई डीएनए सीक्वेंस कोन पाए एई डीएनए सीक्वेंस उडा को हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे माने डिफरेंट इंडिविजुअल एट किछि जगह डिफरेंट बेसेस पाए बेस पेयर पाए जेटा की दीटा इंडिविजुअल्स को सेपरेट बोले देखाई थाए तो सेहित में कोन करला तने एई सीक्वेंस को निया गला जेतरे की कोन करा जाय ना हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू from an individual show the same degree of polymorphism they become very useful identification tool in forensic application further as the polymorphism are inheritable from parents to children DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of dispute तो से कोन कहला ना डीएनए सब टिश्यू रो डीएनए कोन ना तार सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते डीएनए सब हम बॉडी रे जो टिश्यू जो सेल रो भी डीएनए भी आनिबा तार सब सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे इसमें एटा यूजफुल है जे
आइडेंटिफिकेशन ପାଇଁ କେଡା फोरेंसिक माने कोन तमे जानती हो फोरेंसिक मेडिसिन माने गोटे कोठी क्राइम सीन हेची या डेथ हेची तापर से जो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम करंती सेटा कोनती फोरेंसिक मेडिसिन बा फोरेंसिक साइंस कोनती तो सेटा कोन होता है ना हेल्प करो ना आइडेंटिफिकेशन टूल पे हेल्प करे ना फोरेंसिक एप्लीकेशन ना तार डीएनए को लेके देखिबे जे एडा नेचुरल डेथ हेची ना ए जो डीएनए ए जो टिश्यू सैंपल में सेटा को क्रिमिनल रो जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल रो डीएनए को लेके सब मैच करबे जहां पड़ले एटा होच क्रिमिनल तो सेटा होच कोन ना फोरेंसिक एप्लीकेशन यूज है आ कोथे तारे ना कोन पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होची इनहेरिटेबल एटा तमे मन रखिबो एटा मो आउट हाइलाइट रे मारे पॉलीमॉर्फिज्म कोन ना इनहेरिटेबल from parents to children. I wrote an important line. The polymorphism is inheritable. DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of dispute. तो सही थे पाई DNA fingerprinting को कौन करा जाए ना basis करा जाए paternity test रो जे ये ताका parents की नहीं ये पिलाटा एक couples रो बा एक parent रो एक पिलाटा की नहीं सेटा को कौन करा जाए तो paternity test करा जाए तो DNA fingerprinting देखिए कौन पाई ताको DNA fingerprinting कौन है जे and polymorphism टा कौन ना इनहेरिटेबल जो रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस जो polymorphism शो करे बा सैटेलाइट डीएनए जो polymorphism शो करे सेटा कौन ना सेटा इनहेरिटेबल सेही पई DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of disputes as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting it is essential to understand what DNA polymorphism means in simple terms तो polymorphism टा कौन ना genetic mapping और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रो बेसिस तर एडा मन के एडा बेसिक वर्ड मन के जो बेसिक लेक्चर में वो इंपोर्टेंट वर्ड तो पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द पॉलीमॉर्फिज्म कौन ना पॉलीमॉर्फिज्म माने वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल recall the chapter 4 में पढ़ते ता विषय रे New mutations may arise in an individual either in somatic cell or in germ cell. The new mutation both arise होगा ना somatic cell रे होगा ना germ cell रे होगा. There is a generate gametes in sexually producing organism. If a germ cell mutation does not seriously impair individuals ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to other member of the population through sexual reproduction. तो यदि germ cell mutation जल्दी खाली ताको infertile न करी normal fertility maintain करतुव then सेटा कोन हो से mutation का next generation को population कोन हो ट्रांसफर हो mainly germ cell रे कोन हो mainly recombination हो जितने हमर तो बड़ा genes मान का कोन ना recombination रे तो fertilization में father और mother मान को ये भी recombination टा ना ये टाइप रो तो सेडी कोन ना ताको म्यूटेशन भी कोन जर्म सेल के बीच में म्यूटेशन होला केतोडा के डिजीज अछि ताको जर्म सेल मोजाइकिज्म कोनती एरा कोन से माने मेंटलियर डिसऑर्डर जेटा हम पढितिले जे फिल्टर्स ये सेटा क्रोमोसोम आनतिला सिकल सेल एनीमिया समागना मेंडेलियन को फॉलो करंती माने बापा मां पाखरे से डिजीज होता है बट तम जर्म सेल रे म्यूटेशन जगो डिजीज तो छुआ मान को पळे आसी तो सेही कथा कहले जे सोमैटिक सेल हे पारे म्यूटेशन बा जर्म सेल म्यूटेशन हे पारे जाफल कि से ट्रेट टा कोन ना नेक्स्ट पॉपुलेशन को ट्रांसफर हे पारे तो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट by allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01 so allelic frequency allelic sequence variation so এটা important gote allelic sequence variation described as DNA polymorphism if more than one variant of allele at a locus appear in human population with frequency greater than 0.01 तो allelic variation तो allelic variation टा कोन तुमको allelic केमती variation हबो allelic तो गोटे जीन दुटा allele थे तार केमती variation हबो तमे जदि मन पयो कोन ना एबी ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग कोन होता है हम ब्लड ग्रुप जो जीन टा कंट्रोल करे तार तीनटा एलील होता है तो आईए आईबी आई होता है बट नॉर्मल आई होता है तो सेते कोन ना गोटे इंडिविजुअल सिना गोटे इंडिविजुअल गोटे जीन दीटा ही एलील रहबो बट जो तीनटा एलील रही सेटा कोथरे हो जाय ना सेटा पॉपुलेशन लेखा लास्ट चैप्टर में पढी दिली चैप्टर क्रोमोसोम इनहेरिटेंस चैप्टर क्रोमोसोम विशेषण इनहेरिटेंस सेटर में पढी दिली कोन ना एलील रे कोन ना देखाय नॉर्मली गोटे इंडिविजुअल दीटा एलील ते गोटे जीन रे बट तीनटा एलील जो थाए सेटा कोन गोटे पॉपुलेशन में शो करे आ यदि तार फ्रीक्वेंसी 0.01 रो अधिक थिबो तने सेटा को निया जिवो एलीलिक वेरिएशन से एलील को
manage it better than 0.01 thibo. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism. तो आम जो एते देखले somatic cell mutation, germ cell mutation, ताको पुणी next population को जीवा पुणी allelic mutation. At least कौन कहला ना in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a frequency in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. तो कौन कहला DNA polymorphism तो inheritable mutation next population जाकर तब कहा जाए ना DNA polymorphism कहा जाए. The probability of such variation to be observed in a non-coding DNA sequence would be higher as mutations in the sequence may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability. तो कौन करेगा ये जगह probability का chances हो जाए कौन भाई कहीं जो non-coding sequence यदि जहाँ भी mutation है तार तुम चाहे protein बनो इंस्टेड ऑफ non-coding तो सेटा से immediate effect by impact देखा जी वो नहीं individual reproductive ability বা कोई morphological characteristics ऊपर है. But these mutations keep on accumulating generation after generation, form one of the basis of variability or polymorphism. But in mutation टा कौन ना generation after generation में कौन ना accumulate ही चले अब कौन होता है ना basis of variability बा polymorphism को establish करे. There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale changes. Then single nucleotide change in the SNP very large scale of polymorphisms over. For evolution and speciation, such polymorphisms play a very important role. You will study this later in details and classes. The evolution, speciation, content polymorphism very important role. And evolution टा पढ़ी थी evolution टा होची continuous variation, the continuous variation by mutation. तो कौन evolution थी से लेकर polymorphism play a very important role in evolution and speciation. The technique of DNA fingerprinting was originally developed by Alex Jeffrey. The DNA fingerprinting developed करते ना Alex Jeffrey करते he used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It is called variable number of tandem repeats VNTR. This technique is used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe. ताने टा कौन थिला ना DNA sequencing जो है ला it is जो DNA sequencing DNA fingerprinting जो टेक्निक के दी थले ना Alex Jeffrey दी थले DNA fingerprinting टेक्निक अच्छे से ते कौन दी थले ना से सैटेलाइट DNA प्रोब को यूज करते ले जेटा कि very high degree of polymorphism शो करे very high degree of polymorphism शो करे तब कौन करे ना VNTR करा तब variable number of tandem repeats VNTR full form तापर जाको कौन करे द टेक्निक कौन करे ना southern blot hybridization कराला using radio labeled VNTR as a probe. then एटी कौन दी छी एटी छोटा एटी तापर एटी कौन दी छी ना छोटा हमर स्टेप दी छी बट सेटा एक्जेक्टली 6 रो अधिक स्टेप बट सेटा को मु तुमको एक्सप्लेन कर देबी वन बाय वन. तो फर्स्ट करना आइसोलेशन ऑफ डीएनए तन डीएनए को करे हमें आइसोलेशन करिया तापर कौन करे ना डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देके ताको डीएनए को डाइजेस्ट करबा जेमते के VNTR और नॉन VNTR तन हम कोन करे जाउ छै ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करे जाउ छै ना डीएनए फिंगरप्रिंट जो गोटे फोरेंसिक केस से करिया ना फोरेंसिक केस से कला माने एडी धरा जो गोटे सस्पेक्ट अछंती तापर एटी गोटे क्राइम सीन नाम गोटे टिश्यू या गोटे हेयर फॉलिकल कुछ तो गोटे सेल मिलला तो से सेलटा एदिटा सस्पेक्ट रो कहार केडे जाने पे कोन करे हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया जेला सस्पेक्ट भीतर तो से डीएनए फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट रे केमिति करिया फर्स्ट से जो क्राइम सीन रे जो मिलला हमको कोन कहंती जो टिश्यू या ब्लड सैंपल या किछि भी मिलला सेते कोन करिया फर्स्ट डीएनए को आइसोलेट करबा तापर केमिति करिया ताको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कोन करना ताको डाइजेशन करबा जेटा VNTR या नॉन VNTR को हमें सेपरेट ही जो तापर कोन करिया ना ताको कोन करिया ना इलेक्ट्रोफोरेसिस करबा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस को इलेक्ट्रोफोरेसिस अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एटा तुम आगुरो बोझे पडिबो आगो बोले जे अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेटा को एजी को जाय आ कोन कहे ना पेज ना भी तुम सुनिबो जे अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताको कोन कहे ना सेमन को सेपरेट केमति करंती ना तुम एटी आगो पडिबो ना डिपेंडिंग ऑन द जो हमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कोन गला हम ढेर गुडा डीएनए सीक्वेंस एमति पर डीएनए साइज एमति सेपरेट हेला एंडोन्यूक्लियस ऑफ डीएनए को काटिला तो सेटा कोन करे सेमान को
सेपरेशन केमती करबा ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे धरा तो डीएनए तो होउछ हमर नेगेटिवली चार्ज एठी गोटे पॉजिटिवली चार्ज थिबो ताने डीएनए माने कोन ना एमती एमती हेकी सब कोन ना लाइन हिजबो जते अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बा पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करा जो केमती ना डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज एंड साइज ना सेपरेशन केमती बे ना चार्ज और साइज को नेकी माने मैं उल्टा करथिली डायग्राम टा उल्टा कर दिया डायग्राम टा माने जेडा सबटू स्मॉल थे समय कोन पॉजिटिव आड़ को बेसी दियो लार्ज गुडा पॉजिटिव आड़ को बेसी जाई परिबेनी तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड चार्ज को नेकी अगर जे इलेक्ट्रोफोरेसिस बा पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस हबो तापरे कोन हबो ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग मा ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन such as nylon or nitrocellulose nylon or nitrocellulose तर फास्ट कोन करिया ना आमे जे ट्रांसफर ना ब्लोटिंग करबा अगर से आउट सीक्वेंस कोन हबो ना हमें डीएनए को डीनेचर करिया डीएनए को डीनेचर करे कोन करिया ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा अल्काइल मीडियम रे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएनए डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा तापर सिना जाय कि हम कोन कर परिबा ना हाइब्रिडाइजेशन कर परिबा सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड को हम हाइब्रिडाइजेशन कर परिबा एठी जो पर जो हाइब्रिडाइजेशन कथा देखला तत्र हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट करिया सेतर जाय कि ताको हाइब्रिडेशन करा जिवो तापर कोन करबा ना ताको कोन करबा ट्रांसफर करिया कोठी कि ना सेपरेट गोटे सिंथेटिक मेम्ब्रेन रे जेटा को नाइट्रोसेलुलोज बा नाइलॉन मेम्ब्रेन ट्रांसफर करिया आ जो कोन कह जे ताको कोन कह जे ना सदन ब्लोटिंग कह जे सदन ब्लोटिंग टेक्निक कह जे ताको सदन ब्लोटिंग टेक्निक बोले कह जे सदन ब्लोटिंग टेक्निक कह जे ट्रांसफर करिया ताको तापर ताको कोन करिया द हाइब्रिडाइजेशन करिया डीएनए को विथ प्रोब माने कोन with label BNTR probe माने probe होची गोटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेटा कि रेडियोएक्टिव था माने ता देर हमें रेडियोएक्टिव आगरो हमें पके के रखते रेडियोएक्टिव ऐड कर देते जो रेडियोएक्टिव का रेडियोएक्टिव हेवी नाइट्रोजन हमें यूज करते हैं गोटे रेडियोएक्टिव कंपाउंड यदि ऐड करे तो रेडियोएक्टिव यूज करके तब कौन करा जो तब परमिशन जो प्रोब टाको आ प्रोब टाको केमती करा जो ना कॉम्प्लीमेंटरी टू बीएनटीआर एडी तो मुतो कहथिल ना जे गोटे स्टेप छाडी सेटा कोन ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रे कन्वर्ट करे से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रे कोन करा जो नै बीएनटीआर प्रोब को ऐड करा जो बीएनटीआर प्रोब को कॉम्प्लीमेंटरी परमिशन करा जो आ ताको ऐड होबो तापरे कोन होबो तापरे कोन जो तापरे डिटेक्शन तो करे ताको कोन करे जो हमें प्रोब कुछ ना पके दे ताको कोन करे ताको वाश ऑफ एक्स्ट्रा जो प्रोब जो रहे ताको वाश ऑफ कर देबा तापरे कोन करे तब एक्सरे फिल्म रे ताको प्लेस करबा एक्सरे फिल्म रे प्लेस करे काम पय मैं ऑटो रेडियोग्राफी पय तापरे कोन ना डार्क बैंड्स देखा जो सही ऑटो रेडियोग्राफी तो सेडी कोन करे डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोन इन फिगर 5.16 तो सेडी कराला जो पेडनर कम मेटेरियल कम ताको अलगा कराला तापरे एठी अलगा करके एठी देखाला क्राइम सीन जो तीनटा जो क्रोमोसोम मिलला एठी फर्स्ट एठी या संगर कोटा मैच होची या संगर बीएससी संगर एठी बीटा मैच चला तको क्रॉप को ने काम करले एक्स ऑटो रेडियोग्राफी करके कलर अलगा अलगा कलर पैटर्न सब दबो बैंड सब दबो सेडू जणा पड़िबो एठी ताने हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रा सीक्वेंस कोन थिला ना फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट कर देबा तापर ताको एंडोन्यूक्लियस থেকে डाइजेस्ट करे छोटे छोटे फ्रैगमेंट कन्वर्ट करबा तापर ताको सेपरेट करबा इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज तापर कोन करे आउट तापर कोन सीक्वेंस ना एठी गोटे मजर सीक्वेंस कोन रहबा ना ताको डीएनए कोन करे डीनेचर करे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा तापर कोन हो ना सदन ब्लोटिंग टेक्निक कोन करे डीएनए को गोटे सिंथेटिक मेम्ब्रेन रे ट्रांसफर करे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन सिंथेसिस करे तापर कोन हो ना बीएनटीआर प्रोब नि कोन करे जो हाइब्रिडाइजेशन करे गोटे रेडियोएक्टिव प्रोब को ने के से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए संगे कोन करा जो ना कॉम्प्लीमेंटरी जो दी जण एक दूसरे को सेटा कोन करा जो ताको हाइब्रिडाइज करा जो तापर कोन जो से डीएनए फ्रैगमेंट कोन करा जो ना ऑटो रेडियोग्राफी करके डिटेक्ट करा जो द बीएनटीआर बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर्ड टू एज मिनी सैटेलाइट बीएनटीआर कोन कहा जाय ना बीएनटीआर कोन कहा जाय ना मिनी सैटेलाइट कहा जाय द स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज arranged randomly in many copy numbers the copy number varies from chromosome to chromosome in an individual the number of repeats of vary degree of polymorphism as a result BNTR varies from size 0.1 to 20 kilo bases माने 20,000 bases consequently after hybridization with BNTR probe the autoradiograph gives many bands of different size these bands give a characteristic pattern for an individual DNA so band ta kon ଗୋଟେ characteristic pattern ଦଉଥିଲା ଗୋଟେ for individual DNA it differs from the individual to individual in a population except in case of monozygotic identical twin तो individual to individual population rate सबବେଳେ
difference थाए except monozygotic by identical twins. The sensitivity of technique has been increased by use of polymerase chain reaction. Sensitivity increase करके जो ना polymerase chain reaction का जो PCR जापर के हमें कौन ना कोटे DNA को conjugated DNA from a single cell is enough to perform cell ना DNA fingerprint analysis. अगर हमें PCR दे के हमें artificially कोटे DNA को ढेर उड़ा copies formation कर परिवार तो से नहीं कोटे single cell को DNA fingerprint analysis को easy है. In addition to application in forensic sciences, it has much wider applications such as determining population and genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. तो एठी गोटे इंटरेस्टिंग कथा मु तुमको कहବାକୁ जाउची. तमे जानिछ हमर नॉर्मल फिंगरप्रिंट जोटा कि हम फिंगर आंगुली रे जो अछि नॉर्मल फिंगरप्रिंट कोन ना तमे माने जानिछ सेटा डिटेक्टिव सो तमे देखतियो सेटा कोन ताय ना समान फिंगरप्रिंट केतो सब गोटे पाउडर पगे द फिंगरप्रिंट कोन करे समान उठे के आनिबे ताको सेव करके रखबे तो सेटा कोन ना फिंगरप्रिंट तम मन रखछो जानिछो जे सब इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट ता समान बट इंटरेस्टिंग कथा कोन ना एटी तुम जेंते देखिलो जे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन बाकी सब इंडिविजुअल डिफरेंट करे कोन ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ता मोनोजाइगोटिक ट्विन को छाड़ के बाकी समस्त डिफरेंट करे माने मोनोजाइगोटिक ट्विन द डीएनए सीक्वेंसिंग पूरा सेम बट मोनोजाइगोटिक ट्विन द नॉर्मल फिंगरप्रिंट कोन ना अलग तमे सिने को मोनोजाइगोटिक ट्विन रो डीएनए सीक्वेंस पूरा सेम हिथिबो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग करी होबनी बट ताकर जो फिंगरप्रिंट ता नॉर्मल आंगुली रे अछि सेटा होची अलग थाए फिंगरप्रिंट ता दुनिया रे सब लोकंकर अलग एंती मोनोजाइगोटिक ट्विन रे भी आइडेंटिकल ट्विन रे भी अलग तो सेज पे कहया जे फिंगरप्रिंटिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग बेसी रिलायबल दैट हम थर्ड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तार समरी रे भी बेसी किछि इंपोर्टेंट नाही नॉर्मल का सब लिखिछि जहा लिखा कथा एगो तुम पढि देबो तरे याको एबे हम डिस्कस करबा एबे हम डिस्कस करबा exercise group the following as nitrogenous bases and nucleosides the nitrogenous bases होछ adenine thymine uracil cytosine और nucleosides के रहेला ताने cytidine और guanosine होछ nucleosides बाकी सब कोन nitrogenous bases ताबे कोन if a double stranded DNA has 20% of cytosine calculate the percent of adenine in the DNA देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रे कोन আছে चार गैप फुल को जदी हमें नै कि जीवा सबले A इक्वल टू T होबो G इक्वल टू C होबो A इक्वल टू T होबो G इक्वल टू C होबो एडेनिन सबले माने प्यूरिन सबले पिरिमिडिन ताकर सेम नंबर रहबो प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन सबले 100% हेबे तो एडी कोन देखले ना 20% साइटोसिन अछि 20% साइटोसिन अछि माने 20% गुआनोसिन भी थिबो माने 20% गुआनाइन भी थिबो तो गुआनोसिन बोली 20% गुआनाइन भी थिबो ताने 20 गुआनाइन हे गले बाकी केते रहला बाकी रहला हमर केते 80% बाकी केते रहला हमर 80% रहला ताने ना माने 20% साइटोसिन और 20% गुआनाइन हे गले 20 केते रहला 40% रहला 40% चली गले बाकी केते रहले A और T मिसी केते रहबे ना 60% रहले 100% टू 60% A और T रहबे ताने A और T रो कोन हबो ना A + T पेन चेंज करे A + T जदी 60 हेले काहे ना C अछि 20 G होबो केते होबो 20 ताने टोटल हेले केते 40 ताने A T होबो 60 ताने A केते होबो 30 ताने एडेनिन केते अछि ना 30% एडेनिन अछि if the sequence of one strand of DNA is written as empty the right angle sequence of complementary strand in 5 region तमे एटा 5 region तमे एटा लिखि परिबा एटा मु किछ कहया दरकार नै तमे एटा आराम से निजे लिखि परिबो ए जगह रे कोन को जे DNA रे ना ताने ए जगह रे T लगो ए जगह रे T लगो T जगह रे A लगो C जगह रे G लगो G जगह रे C लगो एमती करके हे परिबो तापर सेटा भी नेक्स्ट कथा भी सीक्वेंस ऑफ mRNA सीक्वेंस ऑफ mRNA को सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दीची माने एमिति दीची कोडिंग स्ट्रैंड कोन गुडी तला टेम्पलेट स्ट्रैंड गुडी तला कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड को नेके डीएनए ना आरएनए रेप्लिकेशन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होतला तो कोडिंग स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड एग्जैक्टली एज आरएनए तला बस टी जगह रे यू तला तो एटी कोन करियो जे एटी जति सब टी दीची टी जगह रे कोन करियो ना यू लिखि देबो आ एमटी पर डायरेक्ट रख दो हे गेला mRNA सीक्वेंस नंबर हे गेला and at this corner coding strand बोली कहि then which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesis as semi conservative mode of DNA replication explained and DNA double helix को property ता माने कोन गला ना ताको कहला जे DNA ता DNA replication ता semi conservative इन तो Watson and Crick कोन कहले DNA strand कोन ना anti parallel complementary to each other तो सेही जो anti parallel complementary to each other कहले और सेटा कोन ना डीएनए तो निहाती गोटे सेल रो आउटर सेल को जीवो
तो जो कॉम्प्लीमेंटारिटी और एंटी पैरेलल नेचर सेटा तमन कोन देला ना तांको आइडिया देला जे डीएनए रेप्लिकेशन टा कोन थिबो ना सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर हे कोन तो आइडिया ना एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंटारिटी टा कोन देला ना समान को हाइपोथेसिस परमिसिबल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन थिबो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए और द नेचर ऑफ न्यूक्लिक acid synthesis for RNA is the type of nucleic acid polymerase ताने लेकिन डीएनए और आरएनए को नेकी तारा केते टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज हे पारि ताने फास्ट जति हम कहबा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेले हमर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जति रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन थिबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होतबो ताने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वायरस माने आरएनए वायरस माने तमारे तो नुआ नुआ वायरस को सेटा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थिबो तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करे अपन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट यूज करे बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट यूज करके आरएनए को सिंथेसिस करे से बड़ा बाकी तीन टाइप भी सेमते हे परिबो तो यदि हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नबा तो चारटा हबो डीएनए डिपेंडेंट ए क्वेश्चन रो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज How does Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that their DNA is genetic material? First से कौन करते ना गोटे रेडियोएक्टिव फास्फोरस नहीं थिला और रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं थिले रेडियोएक्टिव फास्फोरस ता कौन थिला ना रेडियोएक्टिव डीएनए थिला और रेडियोएक्टिव सल्फर ता रेडियोएक्टिव प्रोटीन थिला तो जता से सेंट्रीफ्यूज करले तो बैक्टीरियोफेज की जेतिले बैक्टीरियोफेज कौन ना किछोटा जेनेटिक मटेरियल ता सेल भीतर इकोलायर सेल भीतर पठेबो तो देखले जे जता सेंट्रीफ्यूज करले यदि इकोलाई टा रेडियोएक्टिव रहिला त सेटा कोन थिबो ना डीएनए थिला सेटा रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिलला माने सेटा कोन थिला डीएनए थिला आ जदी बाहर जदी रहिला बाहर जदी रेडियोएक्टिविटी रहिला त सेटा कोन थिला रेडियोएक्टिव सल्फर थिला माने सेटा कोन थिला ना प्रोटीन थिला तो सेटा को नहीं कोन हला से माने जो सेंट्रीफ्यूज करी जना पले सेंट्रीफ्यूज करके वेट सेंट्रीफ्यूज डेंसिटी को नहीं तो सेंट्रीफ्यूज मेथड जना पड़ला से कोडा भितु जाय कोडा भितु जाय सेडी जाना पला जे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल तो जे टाइप इकोलाई भितु मिलियो सेटा कोन कहले सेटा तला जेनेटिक मटेरियल द डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए कोन ला स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स को सेवरल टाइम रखतांती सैटेलाइट कोन ना सैटेलाइट डीएनए टा होची गोटे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जेटा कि हाईली रिपीटेटिव डीएनए कंट्रोल करते रिपीटेटिव डीएनए माने कोन ना गोटे डीएनए सीक्वेंस जेटा कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस को ढेर टाइम पे माने ढेर नंबर सेवरल टाइम्स पे रखते हैं आउ सेटा जो हाई नंबर रहेला त कोन कहल ना सैटेलाइट डीएनए कहला त रिपीटेड डीएनए कोन तकर लेंथ रे वेरी करंती सेवरल बेस पर 100,000 हम सेट पर लाइन लिखा हिची और सैटेलाइट डीएनए कोन त सैटेलाइट डीएनए छोटा थाई शॉर्ट इन लेंथ है और ओनली 100 पे लॉन्ग तो सैटेलाइट डीएनए ता कोन त ना छोटा था रिपीटेड डीएनए था ना बहुत लंबा था और कोन ना रिपीटेड डीएनए को जो ना बल्क डीएनए रो सेग्रीगेट करा जो सेपरेट करी हो यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन काइने से माने लाइट बैंड रे अपीयर होती तो सैटेलाइट डीएनए केमती कि हो तो से माने भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन रो रे सेपरेट हेबे काइने ना समय डार्क बैंड और स्मॉल पीक्स से अपीयर होती तो एटा थले रिपीटेड डीएनए सैटेलाइट डीएनए एमआरएनए और टीआरएनए एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए जो टेम्पलेट थाई ट्रांसक्रिप्शन पे टीआरएनए थाई कोन ना एडेप्टर मॉलिक्यूल जेटा कि अमीनो एसिड को कैरी करियारे हेल्प करे एमआरएनए कोन गोटे लीनियर मॉलिक्यूल टीआरएनए कोन ना क्लोवर लीफ शेप बा इन्वर्टेड एल शेप तबरे एमआरएनए कोन ना राइबोसोम से अटैच हिते टीआरएनए कोन ना राइबोसोम से गोटे एंड अटैच हुए आउट एंड रे कोन ना एमिनो एसिड से अटैच हिते और एमआरएनए कोन एमआरएनए टा होची बेसी बल्की टीआरएनए टा होची सबटू हल्का और सबटू सॉल्युबल आरएनए होची टीआरएनए ताबे कोन टेम्परेचर पॉडिंग टेम्परेचर कोन ना गोटे सर्व जो टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पॉडिंग स्टार इज कॉम्प्लीमेंटरी टू टेम्परेचर तापरे टेम्परेचर कोन ना कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू एमआरएनए आउ कोडिंग स्टैंड होची same as the transcripted mRNA just timing जगह uracil थिबो और टेम्परेचर स्टैंड कोन ना 3 days to 5 days डायरेक्शन रे कोडिंग स्टैंड 5 days to 3 days डायरेक्शन रे leads to essential roles of ribosome during translation first the ribosome कोन ना site of synthesis of protein ribosome is the factory of protein synthesis तार दिटा सब यूनिट ते लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट
स्मॉल सब यूनिट कौन करे ना इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करे, लार्ज सब यूनिट कौन करता है ना एमिनो एसिड पे बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, आउ कौन था ना लार्ज सब यूनिट कौन था ना टीआरएनए को अटैचमेंट पे हेल्प करे, आ सेते ढेर गुडा को आरएनए ता 23s आरएनए जेटा कि एक्ट एज राइबोसोम, एटा गोटे राइबोसोमल एंजाइम भाबे काम करे, तो एटा थला राइबोसोम रो फंक्शन। In the medium of where E. coli was growing, lactose was added, which induced lac operation. Then why does the lac operation shut down sometime after the addition of lactose in the medium? अरे ଯେତେବେଳେ lactose ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ଲାକ୍ଟୋଜ ଡାଇଜେସନ ଟା କଣ ହବ, ଲାକ୍ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ କରେ ନା ଲାକ୍ଟୋଜ ଡାଇଜେସନ କରେ, କାରଣ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଲାକ୍ଟୋଜ ଟା କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ଥିଲା, ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ଟା ଯେଟା ରିପ୍ରେସର ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି लाक ऑपरेंट को ओपन करी रखला, तो इंड्यूसर क्वांटिटी कम कमी करे लाक ऑपरेंट जो, तो कौन हो ना इंड्यूसर सप्रेसर को बाइंड कर रख पाएबनी, तो धीरे धीरे कौन करे ना सप्रेसर जाई कौन करिवु ना ऑपरेटर रीजन में जाई बाइंड कर जे आपण लाक ऑपरेंट बंद हो, तो लाक ऑपरेंट बंद होकर रीजन टा कौन ना डिक्रीज इन इंड्यूसर मॉलिक्यूल दैट इज lactose. Explain in one or two lines the function of following. Promoter contains section of DNA जेटा कि इनिशिएशन करे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, अब बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करे आरएनए पॉलीमरेज को। टीआरएनए कौन, टीआरएनए होची गोटे स्मॉल आरएनए डबल लीफ साइड बा इन्वर्टेड शेप आरएनए जेटा कि एमआरएनए को ना जेटा कि एमिनो एसिड को ट्रांसफर करे, जेटा गोटे एडाप्टर मॉलिक्यूल भाबे काम करे। एक्सन्स कौन, जेटा होची कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को एक्सन्स कहती, सेटा ही हमर सब एमआरएनए रो मेन टा था जो प्रोटीन कोड करे। व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, काहे सेटा 13 वर्ष जाई चलतला, $9 billion खर्च होइतला, सेटा सब बेस पेयर 1 by 1 कैलकुलेट हेतला, ढेर गुडा कंट्री से इन्वॉल्व होइतले, और सेटा हमर मेडिकल क्षेत्र रे और मेडिकल फील्ड रे एग्रीकल्चर फील्ड ढेर गुडा फील्ड रे हम मतलब ढेर गुडा स्ट्रीम और न्यू एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज, न्यू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कवर करतला। However, what is DNA fingerprint mention its application? So identifying and analyzing variation in different individual at DNA level को कहते हैं DNA fingerprinting कहते हैं, तो application कौन ना crimes in the suspect को द्वारा पके पे forensic science रे, तापर paternity test रे, तापर identifying and preserving the commercial varieties of livestock and crops, तापर more about human evolutionary history विषय जाने पाएं, तो सेटा पे को ना DNA fingerprinting का यूज। ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कौन ना आरएनए जो डीएनए टू फॉर्मेशन वाला ट्रांसक्रिप्शन को जाए, तो तीनटा स्टेज है, सेटा कौन ना इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, एटा हो ट्रांसक्रिप्शन। तब तुम एते ट्रांसक्रिप्शन मु कहले कोन तुम ट्रांसक्रिप्शन पढी देबो, आ कोन ना पॉलीमॉर्फिज्म ना डीएनए जो रिपीटेड सीक्वेंस है जो गोटे गोटे बेस पेयर जो डिफरेंसेस शो करे, वेरिएशन शो करे, तो 0.1% डीएनए सीक्वेंस, एटा कोन कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को जाए। तब कोन ना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कोन ना प्रोटीन फॉर्मेशन हो बाबू, आरएनए एमआरएनए रो प्रोटीन फॉर्मेशन हो ट्रांसलेशन पड़े, ता विषय भी तबे पढ़ देबा ट्रांसलेशन कोन। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोन ना न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट हेल्प इन होतरे ना डाटा बा सीक्वेंसिंग करिया, कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज करे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ एल्गोरिथम यूज करे के बायोलॉजिकल डाटा को प्रिजर्व करिया कोन करले ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला। तो यही भली भाबे हमर फिनिश वाला कौन चैप्टर ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर करते मोला एटा सब बड़ा चैप्टर थिला, आ सतरे एते सब बड़ा क्वेश्चन आसे, तो बोर्ड एग्जाम में ढेर क्वेश्चन आसे एतरो, और नीट एग्जाम में तो 5 टा 6 टा क्वेश्चन मिनिमम आसे चैप्टर रो। तो चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर को पढ़ी देबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर बड़ा पढ़िबो। एटा ओडी 5 मेरा फिफ्थ सेशन दा लास्ट सेशन दा 5 सेशन दा बाकी सब वीडियो गुडा को देखि देबो, ए चैप्टर बोल से एक्सप्लेन करि सब गुडा को। ठीक अच्छे, गुड बाय, थैंक यू।